Hello guys, welcome to the another session of Skill Edge. So today we are going to see how to work with the text analytics part. Okay, how to work with the text based machine learning task. Okay, so basically before moving to those points, I would like to address few of the important points about Skill Edge. Skill Edge is a platform where you can learn and you have a very good opportunity to gain the right skills as well as to gain a career into the right profiles. Okay, if you want to learn more on this, if you want to learn more on this, you can look ahead to our website. Okay, we have our YouTube channel, you can look it over there. Below you will you will be getting the link of it. Okay, then you can connect over LinkedIn, Instagram, Facebook. We have different platforms where we are available. Apart from this, if you have a real urge of learning, if you want to learn how you can implement data analytics into different streams and how you can work with the data analytics part and enhance and grow in your career, right? So then Skill Edge is the right platform for you all to start your career. Okay, so with this statement we will move ahead with the today's agenda, today's topic, that is text analytics with the help of machine learning. Okay. Okay, so now let me share my screen and let's move with this. Oops. Here we go. So spam and ham, okay, email classification using NLP. So what is basically NLP? What are spam ham? What is classification? We will see all of them one by one. Okay, first, what is NLP? NLP is your natural language processing. Okay, natural language processing means the, the sound we utter, okay, the way we communicate, the language we use to communicate. Okay, so we are helping with the help of machine learning to understand the machine, like we will help your machine to understand our language, okay, our English based language or our generally used languages. Okay, so basically हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो लैंग्वेज है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जर्मन, फ्रेंच एंड ऑल, right? How we can help our machine to understand those language, okay, and work accordingly. So that we will be doing with the help of NLP, that is natural language processing. Okay, so now the next point, okay, how we are going to do that. Okay, how we are going to do that and how is it possible? क्या is it really possible? क्या हम हमारी language machine को समझा सकते हैं? So we have a very good example set by the AI industry, that is your Alexa, the Google one, then the Microsoft one, Cortana. Okay, and there are plenty of them, right? So with the help of them, okay, with the help of that we can decide, right? So now your device will understand your language and do the task accordingly. So how is it possible? With the help of NLP. Okay, so where are the what are the implementation of this NLP projects, and which projects and which types we can use NLP? So you can use NLP in your voice recognition system. You can use NLP in text processing, right? You can use NLP on your chatbot. Okay, chatbot is an byproduct of NLP. Okay, and there are many of them, many of the implementation of NLP wherever your text is involved and you want to perform certain tasks with the help of that text. Okay, there we are going to need that your NLP. Okay, so basically what we do in NLP, okay, and how is it implementable, that we are going to see today. ठीक है, टेक्स्ट के साथ कैसे खेला जाता है, हमारी जो लैंग्वेज है वो मशीन को कैसे क्लियरली समझ में आए, और जो हम हमारी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे वो मशीन तक कैसे कन्वे हो, ये कैसे समझा जाएगा, विद द हेल्प ऑफ NLP, राइट? नाउ स्पैम हैम क्लासिफिकेशन, ये बहुत जेनरिक और वन ऑफ द मोस्ट रेटेड NLP प्रोजेक्ट है. ठीक है, जहां पे वी आर गोइंग टू डिसाइड कि अगर कोई आपका ईमेल स्पैम है या हैम है. ठीक है सर, स्पैम और हैम क्या होता है? ओके,
आपके स्पैम फोल्डर में काफी सारे ईमेल्स मिलते हैं, राइट? जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड गेट 1 करोड़ रुपीज, ऐसा मेल आया आपको. ओके, यू हैव वॉन 5 करोड़ रुपीज इन केबीसी, ऐसा मेल आया है आपको, राइट? जस्ट आंसर दिस 10 क्वेश्चन एंड वी विल प्रोवाइड यू $1 लाख, राइट? सर ये सब जो मेल्स है, ये सब क्या है? स्पैम है. ओके, दिस ऑल फेक मेल्स, राइट? फेक मेल्स है. ओके, तो नाउ हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया? सर कंटेक्स्ट रीड किया, कंटेंट रीड किया, कंटेंट में समझ में आ गया झूठ बोल रहा है, एंड देन वी डिसाइडेड कि इट इज अ फेक मेल, राइट? Similarly, this task, okay, which we are doing, your machine also does the same task, and he will identify which mails are spam and which mails are ham. Okay, ham means generic mail, okay, normal emails. Okay, how to identify this? Let's see this. Okay, let's see this. So in this manner, we are going to use your NLP for classification of emails. Okay, we are classifying emails कि ये fake email है या नहीं है. Fake email है पे तो we will say spam है, fake email नहीं है तो we will say it's a ham. ठीक है? Okay, now let's start with it. So whenever we are moving with any of such analytics part, okay, we need two important libraries. First is your NumPy, which is a numeric library, which makes your computational faster. And then we need Pandas library. And Pandas library is for all your data processing and how to work with that data or how to work with the tabular data. Okay. Now you can also see one more point, what it is. Whenever we have such problem, okay, and that cannot be resolved with the help without the data. So that's why data is said to be a key role playing, okay, in any of the machine learning tasks, in any of the tasks, right? So here we have the data. So okay, data is quite sorted and clear. We have categories, okay, ham, spam, okay, the already it has the mention labels, right? And we have the messages. How many messages? Like go to Giorgio Point, crazy, available online. Okay, joking just now. Okay, spam, free entry in a 2 weekly cop in win FA Cup, right? Okay, 2 फ्री टिकट मिल रही है सर, फ्री कुछ नहीं मिलता, राइट? ओके, तो ये स्पैम है. सर पहले से लेबल्स अवेलेबल है, अवेलेबल है, मैसेजेस के बाजू में कैटेगरी पहले से अवेलेबल है, देन व्हाई वी नीड टू मूव विद इट? Okay, what is the requirement? Why we need to do this? Okay, so this is our data. This is our data of 5,572 rows, okay, and 2 columns. We can see the 2 columns, right? Category and message. With the help of this messages and this label, ये क्या बोलेंगे हम इसको? ये हमारा लेबल है, ये हमारा टारगेट है. हमको क्या करना है? कैटेगरी फाइंड आउट करनी है, राइट? ये हमारा टारगेट है. तो अब कैसे पता करेंगे कैटेगरी को? कैटेगरी को कैसे पता किया जाएगा? ओके, सो अब जब भी आपका मॉडल आपका मैसेज देखेगा, जब भी आपका मॉडल मैसेज देखेगा, ही विल डिसाइड, ओके इसको हैम में रखते हैं, इसको स्पैम में रखते हैं, राइट? दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू डिसाइड. ओके, नाउ as we move forward, okay, as we move ahead, you can see data.shape. Okay, data.shape, what it will help you? Number of data you have, data points you have. So 5,572 data points you have and two categories. Okay, this is your input and this is your output. मैं अगर मैसेज डालूंगा तो मेरे को पता चल जाना चाहिए हैम है या स्पैम है, राइट? Now this is the only data which I have and which I have to use to get the output. ठीक है, अब मेरे को मशीन को सिखाना है. How your machine learning works? Basically, machine learns from the past experiences. Machine learns from the past experiences. So how your machine is going to learn with this? सर ये मैसेजेस देखेंगी और एक कैटेगरी देखेगी. अच्छा, ये ऐसा मैसेज रहा तो ये कैटेगरी, ऐसा मैसेज रहा तो ये कैटेगरी. बट बेसिकली सर ऐसे मशीन को कैसे क्लियर होगा? गो का मतलब until, ये सब चीजें मशीन को क्लियर कैसे होगी? How is it going to happen? Okay, so let's see this, how we can use NLP in this. Okay, ठीक है. Then we move to the next point. Okay, हमारा कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?
सो ham कितने हैं हमारे 4825 और spam कितने हैं हमारे 747. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया सर, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, राइट. दो कैटेगरी है एंड वी नीड टू क्लासिफाई कि हमारा ईमेल स्पैम में जाएगा या हैम में जाएगा. लेकिन ये आपके मशीन लर्निंग के लिए बहुत अच्छा डेटा है क्या? इज इट अ गुड डेटा? नो. द आंसर इज नो. Sir, why it is not a good data for our machine learning model? Because the category you can see the distribution is not proper, right? It is like almost like a 5:6, like a 1:6 ratio. Okay, 1:6 ratio is the right. So now, sorry, now in this case, your model will learn how to detect the ham mails, but for detecting the spam mails, it is going to affect you a lot, right? It will affect you a lot. So in this case, what we are going to do? In this case, what we are going to do? We are going to either do the oversampling, undersampling, or we are going to move with smart algorithm. Okay, this is how we can balance it. But for today, we are not going to do that. Okay, it's just an additional point which you can move ahead with. Okay, now how we can provide the labels. Okay, now comes your labeling technique. Okay, sir, why we need labels? We already have ham spam as our label. Why we need this 0, 1? Okay, because your machine will not understand ham or spam, because your machine doesn't understand the alphabets. Okay, the categories. He only understands numeric values. Okay, what your machine understands only. We are going to learn from sklearn, from we have label encoder. Okay, so why we use this label encoder and what it does? Basically, to label the categories. To label the categories, we use label encoder. Okay, and if we have spam, mark it as 0. If we have spam, we will mark it as 1. Okay, this is how we are going to make it. Okay, with the help of encoding. So the way of encoding is whenever we have ham, it will be marked as 0. Whenever we have spam, we will mark it as 1. Okay, so the purpose of doing this label encoding is because your machine will understand only numeric values. Okay, it is not going to understand your statements. Okay, now where we need to do that label encoding? Sir, we need to do that label encoding on this categorical column. Okay, so what we did, we have imported your label encoder. Okay, we have imported your label encoder from sklearn.preprocessing. Okay, sklearn is the library where we get all the label encoders and all the machine learning modules. Okay, now we have initialized in the next line, we have initialized your label encoder. Okay, right, we have started it. Then we have fit the data. Okay, then we have fitted the data. So category data we have fitted, right? And finally we got the output. So label encoder, in this label encoder we have fitted your data. Okay, and then we have pushed it to data, your categorical values. Okay, now up till now what we have did, okay, is now we have the messages and we have the category associated with it. Okay, 0 means ham and spam means 1. Okay, now in the next step, what we are going to do, let's see that. Okay, how to make your machine understand, this words. Okay, this characters, how to make your machine understand. Sir, ham to समझ नहीं आ रहा था, अब go until journey Jurgon point, ये कैसे clear होगा? Okay, with the help of NLTK library. So as we have sklearn for all your machine learning tasks. Okay, similarly we have NLTK library for all your text related tasks. Okay, so in the text related, all the issues related to your text can be resolved with the help of NLTK library. Okay, now in this NLTK library, first we will see word
tokenize. Okay, we will see word tokenize. So what this word tokenize does, okay, it is very simple. Okay, it is very simple. Just understand it. Okay, whenever you will see a word, so go is a word, until is a word. Okay, whenever you will see a character separated by a space. Okay, जब भी आपको कोई वर्ड अगर स्पेस से सेपरेटेड मिलेगा, सो वर्ड टोकनाइज क्या करेगा, वर्ड टोकनाइज विल क्रिएट अ लिस्ट. ठीक है, आपका पहला एलिमेंट आया, हाँ, कॉमा, सेकेंड एलिमेंट, कॉमा, थर्ड एलिमेंट, राइट. तो बेसिकली आपके जितने भी वर्ड्स रहेंगे वो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट. ओके, नाउ देन वी हैव स्टॉप वर्ड्स. स्टॉप वर्ड्स. सर स्टॉप वर्ड्स का यूज क्या है? स्टॉप वर्ड्स की यूज करते हैं. अब जैसे आपके वर्ड्स हो गए इज, एम, आर, ए, बी, सॉरी, ए, द, इट, वॉज. सर ये बहुत जेनरिक वर्ड है, राइट. ये बहुत जेनरिक वर्ड है, ये बार बार रिपीट होते हैं, ये आर्टिकल्स है. सर इससे हमारे जो सेंटेंस में जो मीनिंगफुल वर्ड है वो रहेंगे, बाकी अनरिलेटेड वर्ड जा सकते हैं, राइट. स्टॉप वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, ओके, विच आर जेनरिक, जिनका काउंट ज्यादा है. अब आपका कोई ऐसे लिखा हुआ है उसमें द, अ, इज, इन, ये बहुत जगह होगा, राइट. तो अगर ये जाता है सो इससे आपके कंटेक्स्ट को फर्क पड़ सकता है, आपने क्या बोला है उसमें फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल सकते, राइट. आई विल गो टू पार्क, ओके, एंड आई, अगर दो यू कैन अंडरस्टैंड, आई पार्क, यू गॉट इट, राइट. आई गो पार्क, राइट. 3 वर्ड्स में हमारा काम हो गया. टू, बाय द टाइम आई विल बी रीचिंग, ये सब की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं. सो दिस इज हाउ वी यूज योर स्टॉप वर्ड्स. अब आता है एक और स्पेशल पार्ट, वर्ड नेट लिमिटाइजेशन. ओके, वी विल सी हाउ टू यूज दिस वर्ड नेट लिमिटाइजर, ओके, and word cloud. Okay, we will understand them. First, let's move towards your word tokenize. Basically, whenever we are moving with any of such text, okay, how to move with it? First, we need to select that column. Okay, then what we did, str. Str means if at all in some of the column, if any of the statement is blank, if any of the statement is number, मैसेज नंबर भी रह सकता है सिर्फ. ओके, अल्फा टू डेल्टा 110225 मैसेज आया, राइट. सो इन दैट केस योर मैसेज लाइक वर्ड टोकनाइज विल ओनली वर्क विथ टेक्स्ट. वर्ड टोकनाइज विल वर्क ओनली विथ टेक्स्ट वैल्यूज, ओके, ओनली विथ स्ट्रिंग्स. ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग्स के साथ काम करेगा, टेक्स्ट के साथ काम करेगा. सो फर्स्ट वी कन्वर्टेड योर मैसेजेस इनटू स्ट्रिंग. ठीक है, देन वी कैन यूज लोअर. देन वी कैन यूज लोअर. लोअर का काम क्या है सर? डॉट लोअर का काम क्या है? डॉट लोअर बेसिकली आपके जितने भी कैपिटल वर्ड्स है सबको स्मॉल फॉर्म में कर देगा. सारे स्मॉल लेटर्स स्मॉल फॉर्म में, कैपिटल लेटर्स भी स्मॉल फॉर्म में. ओके, डॉट अप्लाई. डॉट अप्लाई इज अ पांडास फंक्शन. ये पांडास का फंक्शन है. बेसिकली जब भी आपको कोई फंक्शन या मॉड्यूल अप्लाई करना है पूरे कॉलम पे, इन दैट केस वी यूज डॉट अप्लाई फंक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट वी डिड, वी यूज्ड योर वर्ड टोकनाइज. ओके, अब हमने ये काय में स्टोर कर दिया सर? मैसेज में. अब एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैसेज, जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं मैसेज को, व्हाट वी आर गेटिंग, लिस्ट, वेयर वी हैव गो एज फर्स्ट एलिमेंट, until as second element, Jurong as third element, and so on, right? Okay, okay. सो सर वाई वी डिड इट, इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? अब इससे आपको एडवांटेज ये रहेगा आपका, बेसिकली अब आपके सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए, राइट. अब आप ये चीज निकाल सकते हो कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से नहीं कहलाएंगे? जो बहुत रिपीटेटिव हो रहे हैं, राइट, जो चीजें बहुत बार आ रही है, राइट, वो इंपॉर्टेंट कम है, राइट. इज बहुत जगह है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर. द बहुत जगह है सर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, राइट. सो वी कैन रिमूव देम. सो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर स्टॉप वर्ड्स. ठीक है, स्टॉप वर्ड्स का काम क्या होता है? सो जो चीज सर हमने अभी डिस्कस करी कि आपके जो लिमिटेड वर्ड्स है, राइट, कि इज, एम, अ, राइट, द, जो ये आर्टिकल्स है ये इतने नेसेसरी नहीं है, सो वी कैन रिमूव देम. ठीक है, बट
सर कैसे पता चलेगा? सर एक एक अल्फाबेट निकालना होगा लिस्ट से? नो, वी विल क्रिएट अ फंक्शन ओके फॉर दिस ओके। बट सर कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या नहीं है? स्टॉप वर्ड्स को कैसे पता चलेगा? ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एनएलटी के लाइब्रेरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनएलटी के लाइब्रेरी हम क्या कर रहे हैं? कॉर्पस, कॉर्पस इज अ स्पेस जहां पे आपके सारे नॉर्मल ओके वर्ड्स होते हैं, द, इज, एम, आर, आर्टिकल्स ओके, स्टॉप वर्ड्स, दोज आर कंसिडर्ड एज स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। वहां से हमने स्टॉप वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी हैव टेकन अ रिमूव स्टॉप वर्ड्स। अब हमको इसमें से स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना है। सो व्हाट वी विल डू, हम आपका एक एक मैसेज पास करेंगे, एक एक लिस्ट पास करेंगे, राइट? लिस्ट में वी आर टेकिंग द मैसेज ओके, अंदर के वैल्यूज ओके। नाउ वन बाय वन वी विल टेक द वैल्यूज। इफ वैल्यू इज इन स्टॉप वर्ड्स, अगर स्टॉप आपका जो गो है, अगर गो इसके स्टॉप वर्ड्स में है, इसकी इंग्लिश डिक्शनरी में है ओके, इसके इंग्लिश डिक्शनरी में स्टॉप वर्ड्स में, स्टॉप वर्ड्स की डिक्शनरी में है, तो क्या करेगा? वो रिमूव कर देगा, राइट? वो रिमूव कर देगा। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करेगा? ऐड कर देगा नो स्टॉप वर्ड्स में, ऐड कर देगा नो स्टॉप वर्ड्स लिस्ट में, राइट? अगर गो, सर गो है क्या स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट में, वो चेक करेगा। अगर नहीं है तो नो स्टॉप वर्ड्स में ऐड कर दो ओके। सिमिलरली सारे पॉइंट्स के लिए इट विल मूव दिस वे, राइट? नाउ whenever we are moving with this, whenever we are moving with this okay, messages dot apply okay, सर अप्लाई फिर से यूज किया है सर, ये क्या है इसका क्लियर नहीं हुआ ओके। योर मैसेजेस आर, सर कॉलम है ओके, सो in data frame okay, it is a column of a data frame, we use dot apply function okay, we use your dot apply function in order to implement any function। अगर कोई भी फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो we use your dot apply function। then we have printed your message, what we got okay, we got a list of non stop words okay, we got a list of messages with not without stop words, we got a messages without stop words okay। so now the size of this list is reduced okay, now the size of this list is reduced। now as we have seen earlier, right, wordnet.stream, wordnet limitizer, what is this wordnet limitizer, what it does and how it works okay? wordnet limitizer is basically something which gives value, to your words okay, which brings value to the words okay। so if we have go okay, agar go hai to what your word limitizer will do, it will bring to its base form, it will bring that value to its base form। goes likha hai to it will bring to go okay, agar likha hai went, it will bring to go, right? so this is how your limitizer work। so there are two, one is your limitization, one it is your stemming okay, stemming and limitization, these are the two things okay। limitizer has its own benefit okay, has its own benefit। in word limitization part, what we do, we bring it to the base form, okay, that's why it is much simpler and very easy to understand and use it okay, it is very much easy to understand and we can use it very wisely okay। so now what we did, we have created one function, again applied that function over it। so in that what limitizer, what we did, we limitizes your message। so if at all we have goes, it will come to go, point, it will come to point okay। let me check here, so let me show you okay। so wherever we see the like went okay, it will come to go, wherever we will see gone, we will come to go, right? so this is how it will be bring to the base form। सर इसका एडवांटेज क्या है, अब आपके इसमें और काफी सारे नंबर्स कम हो जाएंगे, काफी सारे वैल्यूज कम हो जाएंगे। अब कहीं जगह गो लिखा है, कहीं जगह वेंट, कहीं गोज, राइट? बेसिकली तो सब गो ही है, राइट? सो नाउ वी कैन रिड्यूस देम। सो दिस इज हाउ योर लिमिटाइजेशन हेल्प्स यू। ओके,
Then now it's your new message. Go until joining bot, right? Now it's been changed to this, right? You can see the change. Okay. You can see in is not there. Free entry in 2 week or weekly. Free entry 2 weekly, right? All those articles are went. Okay. So this is how your lemmatization and stop word had enhanced this new message, enhanced this message. Okay. Basically, we are going to process this message with this lemmatization and stop words so that अब हमको हमारा डेटा एक मशीन लर्निंग मॉडल के फॉर्म में मिल जाए, right? Now we have a generic data with us. So now we will remove these two columns, category and messages, and our new category or category encoding and new messages will be our new machine learning data, right? Now we will move to test train split. Sir, why we are moving to test train split and what we have to do with this? Okay, with the help of test train split, we will decide what are your inputs and what are your outputs. ठीक है, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट से हम डिसाइड करेंगे कि आपके इनपुट्स क्या है, आपके आउटपुट्स क्या है, राइट? टेस्ट train underscore test underscore split, right? So we have x comma y, right? And in the test size we have mentioned 0.2 and random state 42. सर इसका मतलब क्या है, नहीं क्लियर हुआ. और ये चार वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओके, फर्स्ट वेरिएबल दैट इज योर x train, second variable that is your x test, third variable that is y train, fourth variable is y test. So x train is basically inputs for training. Okay, inputs for training. ठीक है, okay. X test inputs for testing. आप क्या inputs दोगे कि आपको result मिले, right? In the test part that we will keep in a x underscore test. Y train में what you will keep? You will keep all those training part in the Y train. ठीक है, like your category. Okay, your category will be in the Y train part. Okay, category will be in the Y train part. Y test में क्या रहेगा? Testing the category, testing values of category. Okay, Y test में क्या रहेगा? Testing the value of category. Okay, now in the test train split, with the test train split, we will have x comma y. Okay, so x are nothing but my features, all the features. Okay, y all the values, all the outputs. Test size is basically from where we are going to split your data. थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए, थोड़ा स्लाइड सा टेस्टिंग के लिए. ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विथ योर टेस्ट ट्रेन स्प्लिट. टेस्ट ट्रेन स्प्लिट से हम क्या करेंगे सर? 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए, 30% टेस्टिंग के लिए, 80% डेटा टेस्टिंग के लिए, सॉरी ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए. सर ये परसेंटेज डिसाइड कैसे होगा? टेस्ट अंडरस्कोर साइज यू कैन डिसाइड 0.2. ओके, टेस्ट अंडरस्कोर साइज क्या है? 0.2. 0.2 मीन्स 20% data will be on the test size, 80% data will be on the training side. Okay, okay. Now random state equal to 42. Random state equal to 42. Sir, why we have keep random state equal to 42? Test size तो clear हुआ, like कहाँ कितना distribution रखना है. Okay, random state 42 का meaning. Okay, random state is basically, okay, if you want to fix that elements. ठीक है सर, पहले 20 टेस्टिंग में चले गए, बाकी के 80 ट्रेनिंग में आ गए, या फिर सर आखिरी के 20 टेस्टिंग में चले गए, पहले के 80 ट्रेनिंग में चले गए. सर ये फिक्स कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ रैंडम स्टेट. सो हर समय आपका एक ही स्लॉट जाएगा टेस्टिंग के लिए और एक ही ट्रेनिंग के लिए. ओके, नाउ टीएफ वेक्टराइजर. सर ये टीएफ वेक्टराइजर क्या है? नाउ लेट्स मूव हियर. ये क्या है सर? ये मैसेज है गो ड्यूरिंग पॉइंट, राइट? अभी हमने नाम को तो नंबर में कन्वर्ट कर दिया, राइट? नाम को, हैम स्पैम को तो हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एनकोडिंग, राइट? बट ये सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करें? इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट सेंटेंसेस इनटू एनकोडिंग? यस, इट इज पॉसिबल with the help of TF-IDF vector. TF-IDF means term frequency divided by inverse term frequency. Okay, term frequency, inverse term frequency vectorizer. ठीक है
सर इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें होने क्या वाला है, ओके सो आपके जो भी पॉइंट्स है, ओके whichever points you have, okay whichever points you have, we will mark them a value. So go को हम 0, during को 1, point को 2. Similarly सर ये ओके 0 रहेगा, नो अ रैंडम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएटेड रहेगा, कोई नंबर एसोसिएटेड रहेगा, हम गो नहीं बेच सकते हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को, ओके सो दैट्स व्हाई वी विल प्रोवाइड वन नंबर टू इट. सर ये नंबर कैसे डिसाइड होगा, नंबर ये कैसे डिसाइड होगा, नंबर विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन, okay number will be decided based on TF-IDF vectorizer, okay TF-IDF vectorizer will decide which number to assign to which word, right. TF-IDF को सर कैसे पता चलेगा, TF-IDF में पहले से एक वर्ड कॉर्पस है जहां हर वर्ड का एक नंबर असाइंड है, राइट हर वर्ड का एक नंबर असाइंड है, बेस्ड ऑन विच वी विल प्रोसेस इट, ओके अब हमने ठीक है सर क्या किया, सिमिलरली हमने वर्ड वेक्टराइजर बुलाया, ठीक है TF वर्ड वेक्टराइज को स्टार्ट किया, ठीक है देन अब हमने डेटा फीड किया कन्वर्ट करने के लिए. वंस वी हैव फिटेड दैट डेटा, ओके अब हमने डेटा फीड कर दिया था. नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमारा कंप्लीटली मशीन लर्निंग के लिए मॉडल रेडी है. अब हमारी कैटेगरी वैल्यूज भी नंबर्स में है, न्यू मैसेज भी नंबर में है, राइट नाउ वी विल बी गेटिंग 1 1 0 2 समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, लाइक समथिंग लाइक दैट. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मल्टीनोमियल नेव वाइज, ओके एक्यूरेसी स्कोर. सर ये क्या है, मल्टीनोमियल नेव वाइज इज एन एल्गोरिथम, okay naive Bayes is an algorithm, okay which gives you the probability. It is a probability based algorithm, okay probability based machine learning model, okay accuracy score सर अब कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है पता करना पड़ेगा, राइट ओके कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहाँ मिस्टेक कर रहा है, राइट ये भी पता करना पड़ेगा, वेरी गुड. एंड फाइनली क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड. सो नाउ द सिंपलेस्ट पार्ट, okay to initiate, to start, to activate your model, then fit your data, okay fit your xtrain and ytrain. Now your model is being trained. Now once your model is trained, you need to predict some values. So you move to predict. Once we move to predict, then we will be looking towards accuracy score, how much precisely we are looking at those values, okay so we get y test and y prits accuracy scores. Now once we have our accuracy score, सर ये accuracy score डेवलप कैसे हुआ, अच्छा तो अब आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट करना चालू किया, मैसेज देखा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और बोला कि नहीं ये 1 में आएगा, ये 0 में आएगा, ये 1 में आएगा, राइट. अब जितनी बार मॉडल आपका सही है, ये देखो ये एक्चुअल वैल्यूज हो गई, यहाँ एक प्रिडिक्टेड कॉलम बन गया है, राइट. अज्यूम whenever you are moving with machine learning, you have to be very good in visualization, right. यहाँ विजुअलाइज करो, एक और कैटेगरी है जो प्रिडिक्टेड कैटेगरी है, तो 0 है यहाँ उसका वैल्यू 0 आया, यहाँ 0 इसका वैल्यू 1 आया, राइट. तो अब हम चेक करेंगे कि कितनी बार सही है, कितनी बार सही प्रिडिक्ट किया है, बेस्ड ऑन विच वी विल फाइंड योर एक्यूरेसी स्कोर. एक्यूरेसी स्कोर तो हमने बुला लिया था स्केलर मैट्रिक्स से, राइट. नाउ उसके अंदर व्हाट वी विल पास एक्स टेस्ट और एक्स प्रिडिक्टेड. तो एक्स टेस्ट जो एक्चुअल वैल्यू है और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, तो वो कंपेयर कर लेगा एंड इट विल प्रोवाइड यू एक्यूरेसी स्कोर, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. सर ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड में, ओके बेसिकली इट विल प्रोवाइड यू कि आपका मॉडल कितना अच्छे से समझ रहा है किस कैटेगरी को. तो जो आपका हैम है, ओके जो आपका हैम कैटेगरी है, नॉट फेक एमएल, उसको कितना 9.97 प्रिसीजन से समझ रहा है, राइट. उसका रिकॉल कितना है 100%, ओके 98% F1 स्कोर, दैट इज नियर बाय परफेक्ट, इट इज प्रेडिक्टिव, ओके. सपोर्ट इज लाइक नॉट रिलेवेंट, मच रिलेवेंट टू अस, ठीक है. सिमिलरली आपके स्पैम के लिए क्या रेशियो है, दैट इज 100%, इट इज प्रिसाइज फॉर स्पैम. 0.79% recall, okay 88% F1 score, that is also pretty good, right. So this is what you will get in your classification report, right. Okay, now
confusion matrix. So this is your confusion matrix 2, 9, 6, 6, 0, 32 and 117. Sir, what did this is clear in your, okay. So basically आपके जो ham mails थे, ठीक है, total ham mails कितने थे सर? 966, ठीक है. तो टेस्टिंग की बात चालू है, ठीक है सर. 96 हैम्स मेल्स परफेक्टली प्रिडिक्ट हो गए, ठीक है. लेकिन हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने कुछ जो स्पैम मेल्स थे उनको भी हैम बोल दिया. कितनी बार? 32 टाइम्स, ठीक है. स्पैम थे लेकिन फिर भी हैम बोल दिया, ठीक है. फेक थे लेकिन नॉट फेक बोल दिया. कितनों को? 32 टाइम्स, 32 मेल्स को, राइट. और जो थे, जितने हैम थे, जितने एक्चुअली मेल थे, उनको एक्चुअली बोला है, राइट. ओके. सो दिस 0, अगर ये चेंज कब होता? जब हमारे जो एक्चुअल हैम थे उसमें से भी कुछ स्पैम बोल देता, कुछ अच्छे मेल को स्पैम बोल देता, तो इन दैट केस आपका रिकॉल पे यहाँ पे 0 के बदले कोई और वैल्यू होता. ओके. देन वी डिड दिस फॉर SVM मॉडल, सपोर्ट वेक्टर मशीन. सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल के लिए भी हमने किया है, राइट. नाउ इन दिस केस यू कैन सी यहाँ 32 था, it's been reduced to 18. So which model we are going to move ahead with? Sir, SVM. Sir, इसका 98% accuracy भी है, right? So this is how we work with machine learning problems using NLP. Okay. So in this NLP task, what we did, we are able to identify your spam and ham with the help of your messages, right? And this is how we are learning day by day a new technology in Skill Edge. Okay. New technology, exploring ourselves, learning new things, and get ready for the placements, get ready for the analytics world. Okay. And if you want to know more, if you want to have a clear and a better picture and a better idea about Skill Edge, okay, we are mentioning in the comment box, okay, our Skill Edge link, okay, YouTube link as well as LinkedIn. You can ping us there and get connected with Skill Edge. So thank you guys for being with us, and that was a really nice to have you all with us. Thank you guys. Thank you for this session.